Again, good evening to all learners. Good evening, sir. I am voice. Okay. So block 5, we proceed today the last class. Today is my last class for you. That block 5 covers the natural resources and management and environment. Natural resources management. So management is one of the important tasks for the government towards the betterment of the rural life. सरकारंकर गुरु दायित्व जे नेचुरल रिसोर्सेस प्राकृतिक संबल को किभली सुंदर भाव रे भल भाव रे परिचालना करिवा सरकारंकर गुरु दायित्व हाउ टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल हाउ टू properly manage the natural resources particularly we can say the earth surface resources, that is farmland, agricultural farmland, forest resources and a desert area, and making the afforestation. So all these things are required. How to properly careerly management that requires the 5M. Management refers to 5M, that is man, money, machinery, material and management. 5PM we can title as the management. So management is 5PM, English letter M. M we can refer to 5M. पांचटा M को लेकर मैनेजमेंट होता है कौन ताले 5M के मैन, मनी, machinery, material and management finally. So the government should manage taking this with the help of these 5M. How we manage the natural resources? How manage the natural resources properly, careerly? That we can say. So a drought-prone area is characterized by continuous degradation of land. जो गुड़ी का अंचल अच्छी आमर नेचुरल रिसोर्सेस ड्रॉट प्रोन एरिया रे लैंड सब बेले डिग्रेडेशन घटू थाए, डिप्लेटिंग वाटर रिसोर्सेस and decreasing productivity of crops, livestock and human resources. यदि ड्रॉट प्रोन एरिया रे हमें देखिबा ताले से अंचल रे कोनोसी प्राकृतिक संबल उत्पन्न हो परिबो नाही एवं अलाइड एक्टिविटीज गाई गोरु छेरी मेंढा हमें पालन करि परिबा नाही एवं क्रॉप रो प्रोडक्टिविटी मध्य कमी जिवो। यदि ए सब कमी जिवो ताहले मानव संबल से अंचल रे तिष्ठिबा मुश्किल, से अंचल रे सभ्यता गढ़ी उठिबो नाही। So there will be hunger and malnutrition and out migration of both human and cattle population in times of distress. So distress समय से हंगर देखा जीवो, माल न्यूट्रिशन देखा जीवो, तो लोक माने से अंचल रो माइग्रेशन घटिबो, अन्य आड़ को थाइबे, तेणु पशु पक्षी मध्य पालन करा जाई परिबो नाही। So most of our arid land mass falls in the desert category due to very low rainfall, low productivity and extreme climatic conditions. Is also subject to frequent drought. ड्रॉट बारंबार आम देश रे देखा जाउची, ओडिशा रे बारंबार ड्रॉट मरुडी देखा जाउची ड्यू टू imbalance of the monsoon, because we know that Indian agriculture is the gamble of monsoon. भारतीय कृषि होची मौसम बायर गोडा जुआ खेल भली, भल मौसम हेले चासी माने भल प्रोडक्शन करिवे, यदि वर्षा ठीक समय रे मौसम न होला ताले चासी आत्महत्या घटिला, प्रोडक्शन कमिबो, the farmers will become a loser. So aims and objective of DPP सरकार सेति पई विभिन्न प्रकार प्रोग्राम सब प्रस्तुत करिसंती, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोजेक्ट एवं
डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जोटा कह जाए हमर डीपीएपी एंड डीडीपी डीपीएपी हला ड्राउट प्रोन एरिया प्रोजेक्ट डीडीपी हला हमर डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम द DPAP and DDP aims at restoring the ecological balance through soil and moisture मूर्तिकार आमर आर्द्रता रक्षा करिबा conservation measures on watershed basis in the present that these area of development programs aims at involving village communities more meaningfully in planning implementation and management of economic development activities. So we should require watershed project in rural areas through the Panchayat Raj institutions. The objective of DPAP and DDP, that is developing watershed, degraded land, drought prone and desert area, watershed basis, keeping in view of the capacity of the land, etc. So promoting the overall economic development and improving the socio-economic conditions of the resources poor and disadvantaged sections of the society, and mitigating the adverse effects of extreme climate conditions such as drought and desertification on crops and human and livestock population for the overall improvement, and restoring ecological balance by harnessing, conserving, developing natural resources like land, water and vegetative cover. So these are the objectives of DPAP and DDP. So need for DPAP ame kahi ki darkar karithanti rural works program that was launched during 1970 and 71 to create assets designed to reduce severity drought in affected areas. विभिन्न अंचल जो ड्रॉट मरुड़ी सब देखा जाउची से अंचल प्रोग्राम सब सेट करिकरी गाँ गाँ अंचल लोक माननकु पंचायत राज इंस्टीट्यूशन माध्यम रे हमें थैथान करिबा हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन डेजर्ट एरिया प्रोवाइडिंग द बेसिक फैसिलिटीज watershed management we should provide करिगाली to the farmers. So DDP sei bali drought desert development program on the recommendation of the National Commission on Agriculture in its interim report during 1974, a hot desert area were identified. Amar dui prakar desert area thai, goda cold desert area and goda hot desert area. For example, Rajasthan na Thar marubhumi अंचल अन्यान्य अंचल सब जोड़ा अछि हॉट डेजर्ट एरिया, जम्मू काश्मीर जो अंचल की कोल्ड डेजर्ट एरिया कोनसी अन्यान्य फसल चाष करा जाई पारे नाही. As for the cold desert area of Jammu Kashmir and Himachal Pradesh, the National Commission also recommended that their specific problem of should be studied. So the cold desert areas was so desert development program DDP program was implemented on sectoral basis to develop poor areas in the long term. It was launched in both hot desert area of Rajasthan and Gujarat and Haryana, जो अंचल विशेषकर वर्षा हुई न था. The cold desert area Jammu Kashmir and Himachal Pradesh, some sort of the recommendation was undertaken by the government to improve the productivity in these hot desert area and cold desert area. So revision of DDP, DPAP and DDP. Development of areas through people's own work plans prepared with the assistance of multidisciplinary technical teams using low-cost indigenous and labor-oriented technology facilitating employment of the local people. जे कौन सी प्रोग्राम सरकार DDP हो, RLGP हो, NREGP हो, IRDP हो, प्रत्येक क्षेत्र रे गाँ गंडा अंचल लोक माने किभली
फैसिलिटेट पाई थांती एम्प्लॉयमेंट पाइबा पाई एवं रोजगार क्षम हवा पाई. So that's why we can eradicate the poverty and unemployment situation from the country. So positive role of the voluntary organization for bringing about coordination between people's organization and a district funding agency for purpose of a project implementation and for extending public awareness, imparting training to the stakeholder, transfer of a program assets to community for maintenance and sharing among the beneficiaries. So ये गुड़ी सब आमर DDP and DPAP माध्यम रे ये सब ऑब्जेक्टिव सब फुलफिल करा जाय था. So how can we grow the production through DPAP and DDP? The criteria for selection of watershed approach towards the DDP, DPAP and DDP. Watershed approach we should apply. Promoting the motivating to the farmers, like criteria for selection of watershed with a preponderance of community lands, को given focus, and by which they may however encompasses private land and degraded forest as well as some extent. जोड़ाक forest land degradation घटी जो डेजर्ट प्रोन अंचल अच्छी से अंचल रे वाटरशेड प्रोजेक्ट सब जोगे दवा. वाटरशेड हैविंग acute shortage of drinking water, जो अंचल संपूर्ण भाव रे जलसेचन कोन सुविधा नाही से अंचल प्रोवाइड करिबा. Watershed inhabited by large population of scheduled caste tribes who dependent on its natural resources. प्रकृति ऊपर प्राकृतिक संबल ऊपर चाषबास करिबा जो शेड्यूल कास्ट होंतु शेड्यूल ट्राइब पीपल होंतु सेमाना पई व्यवस्था कराइबा. Watershed where actually wages are sizable lower than the minimum wage. A watershed contingents to an already treated watershed. टिके के विष्णु प्रसाद बराल टिके म्यूट करो. So the Department of Land Resources Department of Land Resources, the Ministry of Rural Development taking block as a unit sanction the watershed project. प्रत्येक block को Ministry of Rural Development taking step provide the watershed project. The project period is 5 years. DPAP and DDP are administered in the district through जिला परिषद. जेते rural development कार्यक्रम हाथ को सरकार प्रोग्राम सब इंप्लीमेंट करूछंती थ्रू जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी DRDA बा जिला परिषद माध्यम रे कार्यक्रम करूछंती, which receive installment of the central share funding directly. And here a project implementing agency working through a watershed development committee, ओटे committee माध्यम रे एगडा सब implement करा जाय थाय. The work plan prepared by its watershed development committee with the assistance of watershed development team. Watershed development team committee माध्यम रे appointed by the जिला परिषद और पंचायत राज इंस्टीट्यूशन. पंचायत राज इंस्टीट्यूशन बा जिला परिषद माध्यम रे गोटे कमिटी गठन होता है. से कमिटी माध्यम रे को अंचल को को कमिटी की दिया जीवो कोन करा जीवो इत्यादि डिसीजन नै था. सोठी मध्य रोल ऑफ एनजीओ मानकर भूमिका गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहउची ए क्षेत्र रे टू प्रोवाइड दी वाटरशेड असिस्टेंस. नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सोशल सर्विस स्कीम रे समान मध्य ट्रेनिंग इत्यादि अन्य सहायता करि थांती. एंड हियर से माने कोन करि थांती मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन. प्रोजेक्ट जहां सब प्रोजेक्ट ऊपर स्ट्रेटजी निया जाई छी ताको मॉनिटरिंग करा जाय थाय एनजीओ मानक माध्यम रे. केते सक्सेस हैला केते फेल्युअर हैला लोक माने वास्तव रे पाई पाइले के ना नाही वाटरशेड प्रोग्राम इन्वॉल्व हेई पाइले के ना नाही लोक माने फार्मर माने सचेतनता अछन के ना नाही ठीक भाव रे मजूरी दिया जाउची के ना नाही इत्यादि. सो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसएसजी सेल्फ हेल्प ग्रुप मध्य इन्वॉल्व रहंती. कंडक्टिंग exercises preparation of work plan
सुपरविजन ऑफ वाटरशेड एक्टिविटीज ऊपर एनजीओ माने गुरुत्व देथांती प्रोवाइडिंग टेक्निकल गाइडेंस थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट टेक्निकल गाइडेंस मध्ये दिया जाय थाए सो तापर इंस्पेक्टिंग एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट अकाउंट केते खर्च होची कोन करा जाउची इत्यादि ताकू सब इंस्पेक्शन करा जाय थाए मध्य एवं तार परफॉर्मेंस सही थार मध्य जना पड़ी जाय थाए परफॉर्मेंस ता ठीक भाव रे कार्यकारी करूची ना नाही तार अकाउंट सेक्शन माध्यम रे केते डिस्बर्स होईची को अंचल रे को कम्युनिटी गुडी को बेसी डेवलप होईची को अंचल रे कम होईची गोटा बैलेंस सब मेंटेन करा जाय थाए थ्रू अकाउंट सेक्शन सो इंटीग्रेटेड वाटर लैंड वेस्ट लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम आईडब्ल्यूडीपी मध्य गोटा प्रोग्राम थाए इंटीग्रेटेड वेस्ट लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम आम देश रे बहुत आबाद जमी सब अछि वेस्ट लैंड तक कहा जाए से गुडी को मध्य डेवलपमेंट नेचुरल बिकॉज इट इज वन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस we can develop this waste land through different programs so waste land can be we can implement the different programs by applying the 5 pm main money machinery material and management so ita kimiti जोड़ा हमर अछि वेस्ट लैंड किमिति सेगडा सब आइडेंटिफाई करा जाए थ्रू रिमोट सेंसिंग एजेंसी हमर जो सैटेलाइट सब लॉन्च करा जाउची सैटेलाइट माध्यम रे हमर फॉरेस्ट एरिया केते डिफॉरेस्टेशन होई गला फॉरेस्ट केते नष्ट हलानी को अंचल रे केते ड्रॉट प्रोन एरिया अछि डेजर्ट एरिया अछि को अंचल रे वेस्ट लैंड अछि ए जो रिमोट सेंसिंग माध्यम रे एगडा सब आइडेंटिफाई करा जाय था फॉरेस्ट केते कवरेज अछि केते आबाद जमी अछि ए गुडी को सब हमर ए जो सैटेलाइट माध्यम रे फोटो उठै करी साइंटिस्ट माने आजिकल मॉडर्न एजेंसी जानि परले सो रिमोट सेंसिंग एजेंसी नेशनल हमर जो भारत रो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी अछि ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस साइंस हैदराबाद थार अछि has estimated the extent of waste land about to be 70%. 70 million hectares आम देश रे अबाउट 70 मिलियन हेक्टर्स जहा कि वेस्ट लैंड वर्तमान अछि व्हिच इज अबाउट 20% हम टोटल लैंड एरिया को नेले 20% हम पाइबा जोटा कि वेस्ट लैंड रे जाउछि ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री सारा हम देश रे जेति कि ज्योग्राफिकल एरिया हम देखुचंती तार 20% जाउछि वेस्ट लैंड एटा किभली आइडेंटिफाई करा जाउछि ना हैदराबाद रे थिबा रिमोट सेंसिंग एजेंसी हेलो प्रियदर्शनी स्वाई सर जो वेस्टर्न लैंड कहले माने सेटा कोन एग्रीकल्चर माने एग्रीकल्चर अनुपयुक्त ना कोन ना 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 वेस्ट लैंड होची जोगुरा हमर आबाद जमी देखिबो गोटे जंगल थिबो ता पार्श्ववर्ती अंचल रे अनेक आबाद जमी पड़ी की रहिथिबो बा पड़िया भाबरे पड़ी की रहिथिबो जोड़ा कहा जाए वेस्ट लैंड जोड़ा किछि व्यवहार योग्य कामर आसु नै ना गछ नेचुरल एनवायरनमेंट थिबो ना चाष होथिबो ना कोन होथिबो किछि हो नथबो से भली पड़ी की रहिथिबो 20% आम देश रे बुझि परला सो दैट इज व्हाई एटा आइडेंटिफाई करा जाए हमर रिमोट सेंसिंग एजेंसी द्वारा टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री to harness the full potential of the available land resources and prevent their further degradation, the development of the wasteland is great significance. The problem of a degraded land and its management is complex and multidimensional, and its development requires scientific, holistic, and innovative approach. এই যে ওয়েস্টল্যান্ড গুড়িকা আমার আবাদ হইকি পড়িকি রয়েছে চারণ ভূমি भाବରେ जाउची सेठी कोनोसी चाष बास किंबा अन्यान्य जंगल सृष्टि करा जाई पारि न पाए तेनु जेतलो आइडेंटिफाई करा जाए हमर स्पेस साइंस द्वारा सरकार सेठी प्रति चिंता करछथि जे से अंचल किभली अफोरेस्टेशन होई परिबो हां माने जंगल सृष्टि करा जाई परिबो जा फल रे परिवेश प्रदूषण रु हमें सुरक्षा दे परिबा किंबा विभिन्न प्रकार चाष करि परिबा
जा फल आम खाद्य समस्या दूर कर कि जंगल सृष्टि कले आम परिवेश को सुरक्षित रखिपर। सो ये जो प्रोग्राम रे ऑब्जेक्टिव्स कौन अच्छे द बेसिक पर्पस ऑफ द प्रोग्राम इज टू डेवलप wasteland and degraded lands in the country in the integrated manner based on the village micro watershed treatment plants. Specifically, the program fulfilling some of the objectives like developing wasteland and degraded land on watershed basis, keeping in view the capacity of land, site conditions and local needs. Site रे किभली अछि एटा अप डाउन अछि कि पहाड़िया हिल एरिया अछि बा लोक माने से अंचल एडजेसेंट विलेज से वेस्टलैंड को लागि करी केते बसती अछि सेमानकर काम रे आसीबो कि ना नाही सेमाने चाषबास करी कि चली परिबे कि ना नाही ता प्रति मध्य ध्यान दिया जाय था। ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेलो टिके डिस्कनेक्ट हे गला। हेलो वॉइस क्लियर होची त सर हो ठीक है। सो रिस्टोरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस तापर इकोलॉजिकल बैलेंस को हमें रिस्टोर करिबा कंजर्विंग डेवलपिंग नेचुरल रिसोर्सेस लैंड वाटर एंड वेजिटेटिव कवर इन दिस एरियाज। सो एनकरेजिंग विलेज कम्युनिटी ता सहित आमे विलेज कम्युनिटी बा एडजेसेंट विलेज गाँ गंडार लोक मानक मध्य आमे प्रमोट करि परिबा एठी चाषबास करिबा बा जो गुडा का डिग्रेडेड होची दी सरफेस सॉइल रो ऊपरी अंशटा आमे जानि जंती मोस्ट फर्टाइल लैंड फर्टिलिटी सॉइल ऊपरी अंश रे थाए तेणु से जदि डिग्रेडेशन घटिबो ताले फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल आल्सो डिक्लाइन। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पॉवर्टी एलिवेशन community empowerment and development of human and other economic resources of the village will held possible through this program wasteland program माध्यम रे हमें अनेक किछि अचीवमेंट करि परिबा। So criteria selection आमर सब कोन अछि कि भली watershed area selected for development should have a preponderance of wasteland. The area identified for treatment should include common lands and land belonging to SC and scheduled caste and scheduled tribe, small and marginal farmers and other weaker and poor section of the project area. एई लोक मानकु मध्य scheduled caste scheduled tribe जो माने marginal farmers बा having no land से मानको पाई हमें व्यवस्था यदि करेबा they will employed and they can alleviate their poor conditions and produce more and more of the output. So the watershed selected for development should have large population ST and ST dependent on it. जो scheduled caste scheduled tribe लोक माने आ परे निर्भर करूचंती निर्भर करिकि चली परिबे। So watershed should be selected for development in such a way that they are contiguous to one another to drive the maximum benefit out of the development works. Preference should be given to those areas that have not received attention previously for development. जो माने आगुरु सब कोनोसी बेनिफिट पाइ नथिबे सेमानकु बेसी प्रेफरेंस दबा उचित।
So activities of watershed project रे कोउ भली सब activities हमर सब रहिबा उचित development of small water harvesting structure such as low cost farm ponds, check dams, tanks, groundwater research measures एगुडिक ऊपर हम ध्यान देबा उचित renovation augmentation of water sources and village tanks, drinking water, irrigation, fisheries development आमे मध्य फिशरी डेवलपमेंट करि परिबा मत्स्य चाष करि परिबा जोठी आबाद जमी अछि पोखरी खुली आमे सेठी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोक मानको मत्स्य चाष पई प्रमोशन करि परिबा बा मोटिवेशन देई परिबा फिशरी डेवलपमेंट इन विलेज पॉन्ड टैंक्स फार्म पॉन्ड्स एटसेट्रा afforestation including block plantation agro forestry horticulture development आ पर सब आमे ध्यान देई करी ग्रो करि परिबा इनकम सोर्स pasture development either by itself or conjunction with plantation and drainage line treatment with a combination of vegetative and engineering structure आमे टेक्निकल इनपुट्स मध्ये अप्लाई करि परिबा वाटरशेड प्रोजेक्ट रे ड्रेनेज सिस्टम रे हम स्प्रिंकल वाटर माध्यम रे करि करी सिंचन जल सेचन माध्यम रे आमे मध्ये प्रोडक्शन बढ़ाई परिबा so we can properly utilize the जोड़ा को वेस्टलैंड को हमें ठीक भाव रे व्यवहार करि परिबा so next we proceed to discuss about the social forestry and joint the forestry management social forestry जोड़ा हमर अछि forest काहे क्रिएशन करिबा to maintain one balance ecology in the country in our locality balance ecology system how can we maintain if we will focus on the social forestry सामाजिक वन प्रकल्प जोगुडा हमर सब करा जाउछि ताकू सुरक्षा देबे गां गंडा सेही ठिका गां गंडा अंचल लोक माने सामाजिक वन प्रकल्प माध्यम रे आमे गछ चारा रोपण करी गिरी नुवा जंगल सृष्टि करि परिबा ताकू कहा जाय सोशल फॉरेस्ट्री जो माने कि अधिकार से आदिवासी मानकर से जंगल पर सुरक्षा रही परिबो so social forestry project aimed at taking the pressure away from the forestry by afforestation making more afforestation of all unused and fallow lands including village common lands the government wasteland and panchayat land सरकारंकर बहुत मान आबाद जमी अछि पंचायत जमी अछि एवं गां गंडार आबाद जमी बहुत अछि से अंचल रे नुआ नुआ सब चारा रोपण करी गिरी आमे सोशल फॉरेस्ट्री क्रिएट करि परिबा बा सामाजिक वन प्रकल्प क्रिएट करि परिबा along रेल लाइन्स रेल साइड रेल लाइन उभय पार्श्व रे आबाद जमी बहुत अछि रोड साइड रे अछि रिवर साइड रे अछि कैनाल बैंक रे अछि कैनाल रो उभय पार्श्व रे आमे चारा रोपण करी करी सोशल फॉरेस्ट्री करि परिबा या द्वारा कोन हबो ना हमर परिवेश प्रदूषण हवा सहित बहुत लोक उपकृत होई परिबे एवं हमर से अंचल रे भल वर्षा मध्य संभव होई परिबो सो फार्म फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री कम्युनिटी फॉरेस्ट्री ए सोशल फॉरेस्ट्री सब इंक्लूड करा जाउछ सो लाइक इंडिविजुअल फार्मर्स आर एनकरेज्ड जो फार्म फॉरेस्ट्री इंडिविजुअल फार्मर्स पर्टिकुलरली जने व्यक्तिगत चाषी कोन करिवो एनकरेज करा दिबो टू प्लांट ट्रीज इन देयर ओन फार्म लैंड अनेक चाषींकर मध्य आबाद चाष जमी अछि जोठी कि वर्षा जल ठीक भाव रे हेइ न थाए बा इरिगेशन फैसिलिटी न थाए से अंचल रे से नुआ चारा सब रोपण करी करी ताकू से फॉरेस्ट्री करि परिबो प्लांट ट्रीज करि परिबो टू मीट द मार्केट रिक्वायरमेंट्स ऑफ वुड प्रोडक्ट्स हमर जाळेनी काठ प्रस्तुत करि परिबो किंबा फूल चाष करि परिबो किंबा फल चाष करि परिबो सो एई भली सब विभिन्न प्रकार फार्म फॉरेस्ट्री करि परिबो forestry department as well as the industry promoted forestry as a diversification option to conventional agriculture in suitable farmland so planting materials was made available by the state forestry department run planting material जा सब दरकार चारा बा अन्य सब फैक्टर इनपुट्स ताकू आमे तांका ठारू पाई परिबा एवं subsequently industry established buyback agreements with
tree growers and financial institutions also facilitated investment. Financial institution आमे जदि फार्म लैंड करिबा विभिन्न अर्थात फार्म्स बा अन्यान्य फल चाष करि परिबा ताहले आमे फाइनेंस मध्य पाई परिबा. This system developed in the states like Punjab, Haryana, Gujarat, Karnataka, Uttar Pradesh and parts of the Himalaya, Himachal Pradesh. ए सब अंचल रे फार्म फॉरेस्ट्री मध्य प्रचुर परिमाण करा जाय फल चाष एवं कदली चाष अंगूर चाष ए सब सब करा जाउछि. सो एग्रो फॉरेस्ट्री से भली कृषि भित्तिक फॉरेस्ट्री आमे मध्य तयारी करिबा सृष्टि करि परिबा. Agroforestry is the system of land use that combines growing of forest trees along with agricultural crops. The farmlands are used for agricultural crops and the trees are growing along the margins of various needs of the farmers. Most farmers in India grow agricultural crops, real animals and plant certain trees of their land, often boundary areas. So चाषी माने जो माने allied activity करी थांती गाई गोरु पालन करी थांती से माने मध्य घास चाष करी परिबे. एग्रो फॉरेस्ट्री एवं गाई गोरु छेली मेंढा रखिबा पई जो तांकर खाद्य घास चाष करिबा मध्य करिकरी आमे गो पालन करि परिबा, छेली पालन करि परिबा, कुकुडा चाष करि हमर मेंढा चाष करि परिबा इत्यादि. सो ग्रासलैंड आमे सृष्टि करि परिबा. से बली कम्युनिटी फॉरेस्ट्री आमे सृष्टि करि परिबा. Beautification and for reducing noise and dust levels came to be known as urban forestry, developing beautiful landscape for recreation like picnics, jogging, relaxation, education. आमे एगडा सब कम्युनिटी फॉरेस्ट माध्यम रे एगडा सब सृष्टि करि परिबा रिक्रिएशन पाई जोठी आमे कि गोटा पार्क टाइप रे आमे सब सृष्टि करि परिबा सोशल फॉरेस्ट्री माध्यम रे. So that is why that all are depends on the government program and motivation and power of the people and desire to that held by the common people in a rural area. Government will provide sufficient finance and factor inputs by which new forest we can create. So say science and technology. ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ଅଛି ସେଭଳି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫର ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ. ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟି ଇନପୁଟ୍ସ ଫର ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ. ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାରା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲାନି. ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ କରିପାରିବା, ଚାଷୀରେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ କରିପାରିବା, ଆମେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା, ଅଧିକା ପ୍ରଡକ୍ସନ संभव हो परिबो. So our importance कौन अछि significance of science and technology for the rural development. There are several reasons why focusing the science and technology for the benefit of the rural poor in India in both appropriate and timely. So science and technology is the most important means for empowering the poor. That means the rural areas which have not addressed the issue of acquiring science and technology knowledge so far must now redouble their efforts with a strategy that begins with the popularizing science and application to rural development. In concrete terms, it is now an imperative for the government to invest in this technology a huge capital resources to create awareness among the rural people, how they will become so aware about this science and technology. In order to appreciate the role of science and technology in the process of development, it is necessary to understand that science and technology is the means of enhancing productivity. So, and the physical and mental capability of the human beings, it is the instrument for transferring natural resources into useful goods. It is also means of affecting social change, and science and technology has made major contribution to many fields including agriculture, industry, utilization of resources, physical, biological,
financial, infrastructure, health, transport, environment, and the quality of life in general. In every sphere, we can apply the science and technology. So that's why in rural area, the government should motivate, involve to rural youth, and farmers must involve because population explosion are going on day by day. प्रतिदिन जनसंख्या वृद्धि पाई चली जनसंख्या विस्फोरण घटुची तेणु हाउ टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर टू फुलफिल मेंटेन द फूड ग्रेन्स डिमांड of the food grains. We should apply modern science and technology in agricultural sector. That means we should apply power tiller, tractor, sowing machine, cutting machine, and HYV seeds, high yield variety of seeds, and we should apply the fertilizers, chemical fertilizers or biofertilizers in our cornfield, in our farmland, so that can the intensive cultivation will be held possible. गोटे निर्दिष्ट सघन भित्तिक चाष गोटे प्लॉट रे आमे जदि प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी जोगे दबा ताले वर्ष तमाम आमे विभिन्न चाष करि परिबा धान पर डाली जातीय शस्य तापर तैलबीज एई भली सब आमे चाष करि करि चलिबा तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी माध्यम रे ठीक से भली फिजिकल बायोलॉजिकल फाइनेंशियल एंड इंडस्ट्री आमे इंडस्ट्री मध्य स्मॉल स्केल कॉटेज विलेज इंडस्ट्री माध्यम रे आमे मॉडर्न टेक्नोलॉजी अप्लाई करि परिबा सपोज आगे आमे हैंडलूम रे वस्त्र तयारी करथले हैंडलूम हाथ बुना ड्यू टू हेवी डिमांड फॉर रूरल प्रोडक्ट्स गांगना अंचल रे जो संबलपुरी फॉर एग्जांपल संबलपुरी वस्त्र बनारसी पाट बरमपुरी पाट सब विभिन्न प्रकार जो आमे आगे हाथ काम रे बुणी किरी सफिशिएंट आमे मार्केट डिमांड फुलफिल करि पार नथले आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द पावर लूम शक्ति चालित तंत्र एनर्जी माध्यम रे इलेक्ट्रिसिटी माध्यम रे वर्तमान तंत्र सब बाहर पड़लानी जा फल रे वी कैन प्रोड्यूस ह्यूज क्वांटिटी टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द मार्केट ऑफ द पीपल लोक मानकर चाहिदा मेंटेबा पई we can apply the modern technology that is power loom instead of handloom हाथ बुणा अपेक्षा हैंडलूम रे आमे प्रचुर परिमाण रे प्रोडक्शन कर परिबा सो से क्षेत्र मध्ये अप्लाई कर परिबा साइंस एंड टेक्नोलॉजी सो हाउ कैन इट बी पॉसिबल दैट डिपेंड्स ऑन द डिजायर ऑफ वर्क एंड विलिंगनेस टू वर्क ऑफ द पीपल सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स that launched in recent years the major ones the important objectives of the science and technology like science and society program of the development of science and technology the government of India it includes the application of a rural development science and technology application for weaker sections science and technology for women science and technology for practical and strategic needs of SC population empowering tribal groups through science and technology, scheme for young scientists. So several other programs also available for the development of animal husbandry. Animal husbandry ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଅଛି and fishery ପାଇଁ ଅଛି ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ପାଇଁ ଅଛି which are integral part of the agriculture in rural India. विशेष करी हमर गाई गोरु छेली मेंढा पालन करबा ପାଇଁ मत्स्य चाष करबा ପାଇଁ आधुनिक पद्धति रे आमे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अप्लाई करि परिबा डायरी सेति पे हमर कोन अछि जो गाई गोरु पालन करबा पई डायरी डेवलपमेंट प्रोग्राम अछि डीडीपी ओटा अछि डायरी डेवलपमेंट मॉडर्न जो माने के होलिस्टिन गाई गोरु पालन करबा एवं जर्सी गाई पालन करबा प्रचुर परिमाण रे क्षीर प्रोडक्शन होई परिबो आमे मिल्क एवं मिल्क प्रोडक्ट्स करि परिबा बाजार को सप्लाई करि परिबा थ्रू आउट ईयर वर्ष तमाम आमे जोगै परिबा एवं कुकुड़ा चाष करबा कुकुड़ा फार्म रे मॉडर्न टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन करी कि भली कम दिन रे अधिका मांस उत्पादन होई परिबो सो फॉडर डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉडर माने जो गाई गोरु पालन करबा तांका पई फॉडर खाद्य प्रस्तुत करबा
घास चाष करवा एवं अन्यान्य तांको पाई विभिन्न प्रकार गुंड जातीय खाद्य प्रस्तुत करवा जो कि प्रचुर क्षीर दे पारिबे से भली गोखाद्य प्रस्तुत करवा इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम करवा स्पेशल लाइवस्टॉक प्रोडक्शन प्रोग्राम करवा आमर लाइवस्टॉक चाषबास कले बा पशुपालन कले आमे जीवा पशुपालन जिलार मुख्य पशुपालन विभाग विभिन्न प्रकार फैक्टर इनपुट्स पाई परिबा एवं केमती लोन पाई परिबा क्रेडिट फैसिलिटी हाउ वी कैन अवेल सो वी कैन मीट दिस चीफ डिस्ट्रिक्ट सीडीवीओ सहित डिस्कशन कले आमे सब बेनिफिट पाई परिबा स्पेशल प्रोग्राम हैव बीन लॉन्च्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिल एरिया पहाड़ पर्वत अंचल को स्पेशल प्रोग्राम सब अच्छी ट्राइबल एरिया ड्रॉट प्रोन एरिया डेजर्ट एरिया कमांड एरिया etc by adopting area specific approach so सेगुडी को अछि हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हमर अछि देश रे हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जोगडा को पहाड़ पर्वत अंचल रे ट्राइबल अंचल रे प्रोग्राम सब चालू रही थाए तो ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्पेसिफिकली ट्राइबल आदिवासी जन उन्नयन कार्यक्रम विभिन्न प्रकार सरकार हाथ को मध्य नहीं थांती इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम होल विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम ये सब विभिन्न प्रोग्राम आम देश सेगुड़ी को सब आम ताकू प्रॉपर्ली जानिबा दरकार एवं सेगुड़ी किभली कार्यक्रम हो पारिबो ता प्रति मध्य ध्यान देवा उचित so the significance and implementation of the impact of these technology mission and science and technology projects in mission mode for rural development constitute major efforts of the government in the process of rural development like the technology mission for drinking water in village and related water management आमे टेक्नोलॉजी व्यवहार करूछंती गां गंडा अंचल रे मृदु पानीय जोगै देवा पाई ता व्यतीत गां गंडा अंचल रे तापर रिलेटेड वाटर मैनेजमेंट रे आमे किभली जलसेचन उत्तम जलसेचन मध्य एडजेसेंट विलेज पाखापाखी गां गंडा अंचल रे पाखापाखी जो चाष जमी थाए बा विभिन्न प्रकार आमे वेजिटेबल्स प्रोडक्शन करि थांती बा फल चाष करि थांती सेटिकी किभली वाटर सेट जोगे दिया जाय परिबो जलसेचन इरिगेशन फैसिलिटी जोगे दिया परिबो सेति पई आम ट्यूबवेल डीप ट्यूबवेल लिफ्ट इरिगेशन कैनाल सिस्टम माध्यम रे आमे ए सब सरकार ए सब संस्था रु आमे पाई परिबा बेनिफिट तापर इम्यूनाइजेशन मिशन सेल्फ सफिशिएंसी इन वैक्सीन प्रोडक्शन एफर्ट्स हैव बीन गिवन मेड अंडर द मिशन टू एस्टैब्लिश सिस्टम ऑफ फॉर डिजीज सर्वेलेंस and epidemiological monitoring create a linkage with other programs like integrated child development services program modernizing existing vaccine production units जिसो वैक्सीन सब प्रोडक्शन होची पिला मानन को दबा पाई से सब यूनिट गडा को आमे लोक मानकर किभली भलो वैक्सीन बोली लोक मानक मध्य रे गांगन अंचल सचेतनता सृष्टि करबा एस्टैब्लिशिंग वैक्सीन टेस्टिंग फैसिलिटी promote the use of indigenous system of medicine in specific area एगडा सब हमें मध्य इम्यूनाइजेशन मिशन रे गांगंडा अंचल रे सब अवेयरनेस क्रिएट करबा तापर हमर सब आउर कोन अछि द नेशनल लिटरेसी मिशन इट एम साट लिटरेसी मिशन रे कोन रहउछि एम कोन ऑब्जेक्ट कोन इंपार्टिंग फंक्शनल लिटरेसी टू एडल्ट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 35 years. The strategy adopted by mission includes improvement of a learning environment, motivating instructors, learners, institutionalization, post-literacy activities, ensuring the availability of standard of learning. Like वर्तमान जुग रे आमे जे भली ऑनलाइन पाठ पढ़ा या परे सब माने आमे सचेतनता सृष्टि करबा पे पड़िबो विभिन्न प्रकार प्राकृतिक दुर्विपाक बा हमर प्राकृतिक नेचुरल एनवायरनमेंट जदी ब्रेकडाउन होला ताला हमें विभिन्न उपाय मध्य लर्न करि परिबा किछि नथबे को हमें ई लर्निंग माध्यम रे इलेक्ट्रॉनिक्स लर्निंग माध्यम रे बा ऑनलाइन पाठ पढ़ा माध्यम रे मध्य किछि जानि परिबा जदी फिजिकल मोड रे हमें न पाइलेनी स्कोप ताले हमें ऑनलाइन माध्यम रे बा ई लर्निंग माध्यम रे
रेकर्डिंग माध्यम रे आमे किछि पाई परिबा। सो ऑयल सीड्स मिशन से भली अछि, दि टेलीकॉम मिशन अछि। टेलीकॉम मिशन रे कोन पाइबा, इट वाज meant to increase connectivity and accessibility. The main emphasis was on improving the quality services, improving delivery of telegrams, provision of telex on demand, improvement in connection, communication and building of a national digital network. होल उपरे वर्तमान जुग रे आमे देखुचंती होल नेशन वर्ल्ड वाइड there is digital network. In every respect we are following the technology बा इलेक्ट्रॉनिक्स मोड रे आमे सब कार्य वर्तमान सब संपादन करूछंती। जेते मनी बैंकिंग क्षेत्र रो, फाइनेंशियल सेक्टर रो बा अन्य क्षेत्र रो आमे इलेक्ट्रॉनिक्स मोड रे सब काम डिजिटल माध्यम रे करा जाउची। वर्तमान सरकार मध्य मोटिवेटिंग करूछंती जे डिजिटल माध्यम रे किभଳି करा जाय परिबो। डिजिटल माध्यम रे आमे जदी कार्यक्रम मनी ट्रांसफर करिवा, बैंकिंग हैबिट क्रिएट करिवा, ताले विभिन्न प्रकार जो हमर भाइरस डिजीज रु आमे रक्षा पाई परिबा। टंका जेतबेले कार विशेष करी भाइरस गडक बा बैक्टीरिया गडक बेसी स्प्रेड हेतांते एई जो ट्रांजैक्शन माध्यम रे, मुद्रा कारोबार देण नेण माध्यम रे। गोटे टंका मुद्रा होची फ्लोइंग इन नेचर, नॉट स्टॉक इन नेचर। मुद्राटा सबले प्रवाहमान जनक हाथ में न थाए। से मु किनिली, मु अन्य जन को दे देली, से कौन कला, से आउ जन को दे देला। एबा दैट इज फ्लोइंग इन नेचर, फ्लोटिंग इन नेचर। तेणु का पाखरे को रोग अछि, को डिजीज अछि, का हाथ में कौन बैक्टीरिया अछि बा भाइरस अछि, के किछ कहि परिबेन। तेणु कर आमे जदी ई ट्रांसफर सिस्टम रे बा इलेक्ट्रॉनिक्स मोड सब काम करि परिबा, ताले आमे विभिन्न प्रकार बैक्टीरिया भाइरस रु आमे रक्षा पाई परिबा। डिजीज रु विशेष करी भाइरस बैक्टीरिया एगुडी को सब माने टंका कारोबार माध्यम रे विशेष बहुत बहुल परिमाण रे व्यापी थाए, स्प्रेड हे थाए हला। तेणु एगुडी को सब ऊपर आमे ध्यान देबा उचित। सो टेक्नोलॉजी एंड रूरल डेवलपमेंट, जीआईएस हमर अछि ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीआईएस हमर गोटा टेक्नोलॉजी, स्पेशियल टेक्नोलॉजी तक कहा जाए, स्पेशियल टेक्नोलॉजी एंड रूरल डेवलपमेंट जोड़ा कहा जाए ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस। So GIS enables us to relate geographical information to any point of globe. For example, globe उपरे आमे किभली आमे धारणा पाई परिबा विभिन्न अंचल। To know about the possibility change in weather of our village, town at a given point in time, we may collect general information about rainfall, about that time and the location reference of our village, forecast, what may expect there is immediate future. So geographical information आमे किभली पाई परिबा, वेदर कंडीशन, को अंचल जियोग्राफिकल बा अंचल रे को अंचल रे वर्षा हबो, को अंचल हबो नै, को अंचल लाइटिंग हबो, ए सब पूर्व सतर्क सूचना आमे रिमोट सेंसिंग माध्यम रे पाई परिबा। अच्छा, वेदर एंड क्लाइमेट आमे जानि छथि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। सो वेदर माने गोटा टेम्पररी द एनवायरनमेंट, द एटमॉस्फेरिक चेंज टेम्पररी इन ए पर्टिकुलर कन्फाइंड एरिया। वेदर तक कहा जाए जे पाणीपाग, पाणीपाग ओडिया रे कहा जाए वेदर हला पाणीपाग। जलवायु, जलवायु हला क्लाइमेट। ताले आमे जलवायु किभली निर्धारण करिबा ना, आमे विभिन्न प्रकार मॉडर्न टेक्नोलॉजी माध्यम रे आसंता काली रो जलवायु किभली रहइबो हम अंचल रे हला। सो बा पाणीपाग हमर किभली रहइबो। सो वेदर इज ए टेम्पररी कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेदर होची हमर गोटा एटमॉस्फेयर रो गोटा टेम्पररी कंडीशन, बट क्लाइमेट इज ए परमानेंट conditions of the atmosphere. It runs for the long period. दीर्घ काल पर्यंत जो देश रे गोटे निर्दिष्ट जलवायु प्रभावित होई थाए ताको कहा जाए क्लाइमेट। सो वेदर होची टेम्पररी इन नेचर। आजिर जलवायु कोन हमर पाणीपाग कोन थिला,
ना हॉट क्लाइमेट हॉट वेदर कंडीशंस बा आज प्रबल वर्षा हला रेनफॉल हला सो वेदर भल नथिला बा आज प्रचुर लाइटिंग हला लाइटिंग सहित वर्षा हला सो वेदर वाज बैड सेटा होची वेदर वेदर होची टेम्पररी इन नेचर इन ए पर्टिकुलर रीजन टेम्पररी इन नेचर द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एटमॉस्फेयर रो गोटे टेम्पररी अवस्थान को कुआ जाए हमर वेदर क्लाइमेट इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस दीर्घ काल पर्यंत जोटा एटमॉस्फेयर रे प्रिवाइल करि थाए ता कुआ जाए क्लाइमेट तो ये सब हम जिंस ये सब अवस्था प्रकृति रा हमें जानि परिबा विभिन्न प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम रे सो द GIS in the future in the context of rural development is a very bright and environmental studies geography geology planning business marketing and other disciplines have benefited from GIS geographic information system माध्यम रे हमें एगडा सब जानि परिबा GIS mark improvement of the satellite so satellite माध्यम रे एगडा सब संभव होइता है and controlled by the USA Department of Defense. Though today there are many civil users of GPS worldwide, GPS सब व्यवहार करा जाउछि वर्तमान GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम तकवा GPS वर्ल्डवाइड इनफॉरमेशन हमें सैटेलाइट GPS माध्यम रे मॉडर्न टेक्नोलॉजी सु बाहरलानी हमें जानि परिबा GPS माध्यम रे गोटा सपोज गोटा डकायत बा चोरटाई गोटा गाड़ीटा को हायरिंग कर थेफ्ट करी नै गला हमें जीपीएस माध्यम रे हमें ताकू लोकेट कर परिबा सो फॉर जीपीएस सैटेलाइट सिग्नल्स आर यूज्ड टू कंप्यूट पोजीशन ओ पोजीशन रे कोन अछि हम जानि परिबा इन डिमेंशन टाइम ऑफसेट एंड रिसीवर क्लॉक द स्पेस सेगमेंट ऑफ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द जीपीएस सैटेलाइट these space vehicles send radio signals from space. The GPS provides special coded satellite signals and that can be processed in a GPS receiver, enabling the receiver to compute position, velocity and time. समय प्रति मिनिट इत्यादि सब गुड़ा को शो कर दो जीपीएस माध्यम रे सो रिमोट सेंसिंग आरएस तक कहा जाए रिमोट सेंसिंग is the science and art of obtaining information about a phenomenon without being any contact कहा को हमें कांटेक्ट न करी हमें रिमोट सेंसिंग माध्यम रे विभिन्न इंफॉर्मेशन पाई परिबा सो आरएस डील्स विथ द डिटेक्शन मेजरमेंट ऑफ फेनोमेनन विथ डिवाइस सेंसिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी सच एज लाइट कैमरा हीट एंड रेडियो वेव्स रडार माध्यम रे हमें एगरे सब रिमोट सेंसिंग माध्यम रे हमें ऑपरेट करि परिबा बा हमें सब कथा जानि परिबा वर्तमान हमें घर गोटे जगह निर्दिष्ट जगह बसिकरी हमें सब जानि परिबा सो फैक्टर्स एसोसिएटेड विथ द यूटिलाइजेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी ऊपर हमें जानि परिबा रिमोट सेंसिंग माध्यम रे सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक इनकम्पैटिबिलिटी नॉन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी very rapid change in technology and the resultant digital transformation leading to e-governance, e-commerce, e-health, e-education, e-crime सब हमें जानि परिबा साइंस एंड टेक्नोलॉजी माध्यम रे सो e-health हमें किभली करि परिबा एबे एनी की कोन देखा जाउची जे गोटिए रोगी की बेड रे हमें छाडी देई पळी आसी परिबा ता पाखरे कोनसे अटेंडेंस दरकार पड़िबो नै कारण सेठी गोटे जीपीएस लगा जाय थाय से बेड रे से बेड इंडिकेट कर दबो
बा सिग्नल दबो जने अटेंडेंट को जे रोगीटी वर्तमान उठी बसुची बा रोगीटी बेड रु पड़ी जीवो बोली जना पड़लानी सो जीपीएस सिस्टम हम पटकिन रोगी की जाके ताकू सुव्यवस्था करदेवा सो से बोली आम इ एजुकेशन इलेक्ट्रोनिक्स एजुकेशन ये जो आम ऑनलाइन में पाठ पढ़ुचंती इ हेल्थ इ कॉमर्स बिजनेस तो होची पूरा इ कॉमर्स माने हमर ए ऑनलाइन माध्यम रे कैपिटल इंटेंसिव नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी लो इनकम scarce capital credit social inequalities lack of information about technology lack of infrastructure facility lack of easy timely and adequately availability of science and technology lack of marketing facilities etc uncertainty profitability benefits of new technology या पर यही सब गुड़िक फैक्टर्स एसोसिएटेड विथ द यूटिलाइजेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जदि आमे एबेका जुगरे व्यवहार करि परिबा ताला आमे अनेक जिंस सारा विश्वव्यापी आमे अटैचमेंट हे परिबा बा लिंक हे परिबा जदि आमे इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम को वर्तमान छाड़ी परिबा कारण गोटा विराट रिवोल्यूशन वर्तमान सारा विश्व रे ए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऊपर वर्तमान चालू रही तेणु हमको कौन करबा पड़िबो जे हमको ए साइंस एंड टेक्नोलॉजी सहित अटैचमेंट होबा पड़िबो दो इट इज ए ग्रेट रिवोल्यूशन वर्ल्ड वाइड सो डिजिटल इंडिया आम देश रे मोदी जी सरकार डिजिटल इंडिया रे परिणत करिबा पई संपूर्ण भावे लोक मानक मध्य सचेतनता वर्तमान सृष्टि करूचंती सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाउ कैन कंबाइन द वर्ल्ड इनटू ए फ्यू स्पेस बाय व्हिच वी कैन लिंक विथ ईच अदर प्रत्येक देश परस्पर लिंक हे परिबे एवं सडनली कौन गोटा हापनिंग हाँ जाऊँगी भविष्य कौन आम इमिडिएटली प्रति मुहूर्त आम जापर अर्थक्वेक हो बा नेचुरल कैलामिटी हो बा साइक्लोन हो फ्लड हो बा अन्य प्राकृतिक दुर्विपाक हो आम साइंस एंड टेक्नोलॉजी माध्यम इमिडिएटली आम जापर से अनुसार आम सतर्क प्रिकसन नहीं पार सो सिग्नल आसनानी थैंक यू टू ऑल लर्नर्स आई क्लोज ऑल माय block today so learning so learning गोटे सुन शिक्षा ग्रहण करिबा लर्निंग कोन लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस शिक्षा गोटा होची के भाबुथबो मु जॉब रे अछि शिक्षा ग्रहण करती तथापि मु जने स्टूडेंट अछि इट इज ट्रू सुन लर्निंग कहा कहा जाए लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस मु लास्ट तुमको गोटे सचेतनता सृष्टि करूची जे शिक्षा होची जीवन व्यापी एक साधना गीता को भागवत को वर्तमान आधुनिक शिक्षा पद्धति को लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस देयर इज नो एंड लर्निंग हमें वी डू नॉट लर्न not only from the classroom but also from this everywhere जेतेबेले when we ज्योतिर्मय टिके म्यूट कर हाँ सो आमे शिक्षा कहले कौन बुझुछु शिक्षा कहले when there is a radical change in our attitude behavior and in memory हमर किछि परिवर्तन घटले ताकू शिक्षा बोली कहा जाए in positive way not in negative way so we can learn from this universe from nature from tree from sky from wall from family members from brothers sisters grandfathers grandmother छोट छोट पिलांग थरु मध्य हमें शिक्षा ग्रहण करि परिबा कारण हमें किछि गोटा नुवा जिंस जदि जानिबा so that is also known as learning गोटे जीवन व्यापी साधना there is no end throughout life from born to death we learn something new in positive way that is different from the motivation होछि गोटा temporary in nature when we motivate we inspire for better work now, motivation is just like sea tide motivation just like समुद्र गोटा उत्साह ढेउ भली लहरी भली so motivation just come and back समुद्र लहरी जे भली विराट विराट ढेउ आसे कूल रे बाड़े हेकरी पुणी बैक करी जाए motivation is just like sea tide
मोटिवेशन केतेबेले आसे सेतेबेले आमे असंभव को संभव कर दी थांती आमे तो मोटिवेटेड हेता सो मोटिवेशन आमे सेति पई कोहा जाय मोटिवेशन प्रेस द राइट बटन गेट द डिजायर्ड एक्शन इज नोन एज मोटिवेशन आमे जो भली मोटिवेट करिबा हमर लोक मानक ठारू बा वर्कर मानक ठारू इन एनी प्रोजेक्ट वी कैन ड्रॉ द एक्शन आमे जो भली गोटे लोक को पिलाटा को मोटिवेट करिबा गोटे पिला को से सेही भली तार एक्शन ता परिप्रकाश पाइबो जेतबेले से डिमोटिवेट हो जाए तार एक्शन ता जीरो हो जाए सो वी ऑलवेज मोटिवेट आवरसेल्फ एंड मोटिवेट टू अदर्स फॉर बेटर वर्क activities so that is also linked with learning is a lifelong process there is no end learning शिक्षा जोड़ा जीवन व्यापी साधना जहाँ आमे गोटा नुआ पाइले सेटा आम पई नुआ कारण आमे आगुरु ताकू जानि नथिले तेणु आम पई सेटा हला नुआ एजुकेशन रास्ता रे जाउचंती आमे गोटा ऑब्स्टैकल फेस करले विराट प्रतिबंधक फेस कले एवं तादरु पार हो गले मुक्ति पाई गले आमे सेठी कोन कहंती मु आज गोटा शिक्षा पाइली जेते वयस्क लोक होना कहीं सो लर्निंग होची गोटा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस आमे सब आडू शिक्षा पाई परिबा केवल क्लासरूम रु नुहे टीचर पाठ पढोथिबो चॉक डस्टर धरी दैट इज नॉट ओनली रेफर्स टू लर्निंग बट वी लर्न एवरीवेयर फ्रॉम दिस यूनिवर्स फ्रॉम दिस एनवायरनमेंट ए परिवेश पृथ्वी रु घर रु बाहरु जहाँ आम पई गोटा नुआ हला एजुकेटिव वैल्यू जहाँ में लर्न कले सेटा आम पई हला शिक्षा सो शिक्षा होची गोटा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस सो गो अहेड प्रोसीड एंड डेवलप योर कैरियर थैंक यू टू ऑल लर्नर्स फॉर योर फ्यूचर बेटरमेंट टुडे आई रिमेन हियर आई एक्सपेक्ट maintain your beautiful career and try to prosper your life in future तेणु आज एठारे मो रखिली सरी गला तमरो सर गोटे क्वेश्चन केवल थिला हां को